Okay. Keep reading. Motion in a vertical circle. Motion in a vertical circle. वर्टिकल सर्किल मीन्स मालूम है ना, वर्टिकल सर्किल बोलते क्या है, सिंपली एक स्ट्रिंग लिया, एक बॉब लिया, ऐसा घुमाऊंगा, जुम 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 ऐसे घुमाऊंगा, वर्टिकली घुमाऊंगा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर वो बॉब का जाने से में टेंशन विल चेंज और नॉट चेंज, टेल मी, व्हेन वी रोटेटिंग इन अराउंड द सर्कुलर पाथ द टेंशन विल चेंज और नॉट चेंज? यस और नो? टेंशन विल चेंज और नॉट चेंज? अरे बोलो. Sure, Every it time change. tension will change. Tension will change. And velocity will change, yeah? Every point of time. We're rotating like this, zoom, zoom, zoom. ऐसा vertical motion घुमा रहा हूँ. So velocity also will change. We will see, मतलब एक certain angle जाने के बाद कितना velocity होगा, उसका expression क्या है, उसकी tension क्या है, where we can find all normal acceleration, tangential acceleration, पूरा उसमें कहानी देना पड़ेगा. And दूसरा things we learn is, अगर मैं कितना velocity दूं, such a way that it will complete the circle. ओके. अगर उससे कम दिया तो इट विल ऑसिलेट, ऐसा कुछ वेलोसिटी सब देयर, वो पूरा डिटेल में करने वाला है पूरा. ओके. चलो. सो आइडिया आया ना वर्टिकल सर्कुलेशन क्या है बोल के? ओके. सो दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. एक बॉब है, एक लेंथ है. इसको थोड़ा घुमाया ऐसा वर्टिकली, राइट, थोड़ा धक्का दिया, इट विल गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक ऑसिलेटिंग, राइट, इनिशियली. व्हेन का लेंथ है, टोटल लेंथ इज एल. ओके. व्हेन द पार्टिकल केम अप टू हियर, I want to calculate velocity at that point. I want to calculate velocity at that instant में, at B में. If I given velocity कितना है? V naught. V naught velocity is given. Initial velocity V naught is given to you. How to find? Tell me. How to find in this case में velocity at this point B? You will tell and tell the answer. Question understood, right? I given धक्का like सा with velocity V naught. ये बॉब जाएगा 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 इधर तक आया. Now question is, how much velocity is it at that point B? मतलब V is telling to find at B में what is the velocity is how much? What do you do, Krishna? How to find velocity there? So there was a formula. What formula? Formula use नहीं I करने का. forgot. So Okay. root 2 GL into 1 minus cos theta, I think. नहीं ऐसे नहीं, क्या मेथड करेगा? So From here to here. conservation of mechanical energy. देखो, from here to here any friction is there? No. Any work done by external agent? No. That means whenever there is no friction, there is no work done by external agent, we can use conservation of mechanical energy. Okay. So what is conservation of mechanical energy says? Ui plus ki is equal to uf plus kf. Okay. Initially this is a ground reference I'm taking. This is a reference. So initial potential energy is 0. Initial kinetic energy is half m v naught square is equal to, when the bob is reaching here, ground से कितना height गया, that is, ये याद है ना, L का इस तरफ component is L cos theta, ये कितना होगा, total minus L cos theta, that means L into 1 minus cos theta. तो मैं total length is L, right? How much height ground से ऊपर गया ये वाला, L minus L cos theta is nothing but height, right? So what is the initial final potential energy? M G H is this one, L into 1 minus cos theta plus final kinetic energy is half m v square. Now find v from this expression में, find v, you send all one side, so m cancel हो जाएगा, m, so v naught square by 2 is equal to gl minus gl into 1 minus cos theta is equal to plus half v square. अब v find करो, bring all one side and v find करो. So 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, v naught square is equal to 2gl into 1 minus cos theta plus v square. So v is equal to v naught square under root, right, v naught square minus 2gl into 1 minus cos theta under root, right.
right? So what is the formula? This is the formula. This is the formula I told you forgot this one. So V is equal to V naught square minus 2GL into 1 minus cos theta. This formula you have to remember. I already put in the formula sheet. So ये formula advantage क्या है? We can find any angle theta में. See a expression velocity you can find any angle. It can be 90, 180, 270. Any angle in vertical circular motion में we can find the velocity. If I know the initial velocity, I can find velocity at any point. Angle तो मालूम पड़ेगा. Angle always vertical से ही लेना पड़ेगा. Because derivation में we are taking from vertical, right? Vertical से लेना पड़ेगा theta. So formula क्या है? V is equal to under root V naught square minus 2G L into 1 minus cos theta. ये आएगा? Yeah. Now ये formula आ गया ना कृषा formula? बोलो try करो फिर से. V is equal to under root formula बैठ करो बोलो. Under root V naught square minus 2GL bracket 1 minus cos. 1 minus cos theta. This is the formula. Okay. Now he is telling to find tangential acceleration. Tangential acceleration. How to find? Well, normal acceleration, right? Tangential acceleration nothing but normal acceleration only. So when it's coming from here to here, at this point में I want to find acceleration. कितना है? उस point B में क्या acceleration कितना है? So acceleration net force by net mass. करो कितना होगा? उसके ऊपर कितना force act हो रहा है? उसके ऊपर चल में देखो because of what it is acting towards the mean position. Again coming back to mean position, net force कितना होगा in a motion में? देखो if I take downwards mg and इस line का extend किया, angle between the vertical and line is theta. So what is the component? mg cos theta and ये वाला mg sin theta. So bob के ऊपर which force is acting now? Cos. mg No, sin sin theta is acting. So tangential acceleration will be net force by net mass mg sin theta by m. So क्या होगा? g sin theta is the acceleration. ये फॉर्मूला ऐसे याद रखो. tangential acceleration g sin theta. अगर थीटा चेंज करता गया तो आपको एनी टाइम फाइंड एक्सेलरेशन. Vertical circular motion, tangential acceleration is always g sin theta. हां g sin theta. Always. हाँ ऑलवेज थीटा वेरी मतलब जी सेंट में थीटा वेरी करने समय आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल चेंज. ओके नेक्स्ट बिकॉज एवरी टाइम में एमजी साइन थीटा ओनली एक्टिंग राइट नीचे आने के लिए. तो वो ही आएगा. एंड नॉर्मल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस सर्कुलर पाथ डायरेक्शन चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन व्हाट इज फॉर्मूला? V square by R. V square by R. So V square at that point में V है ना, V square by R is nothing but L length, right? Yeah. So V के जगह में you can substitute this one. V square means simply V naught square minus 2GL into 1 minus cos theta by L. So इसका फॉर्मूला सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये याद रखो. दैट्स इट. याद रखो ये वाला G sin theta एंड ये वाला तो वेलोसिटी तो याद रखना पड़ेगा कंपल्सरी. Okay, we are doing vertical circular motion का उसमें we found velocity, tangential acceleration and centripetal acceleration at that point at that instant में. Okay, now हो गया covered. देखो if the bob is given with a very small initial velocity, v not दूंगा, suppose little velocity दूंगा, then after transversing a small angular amplitude, it will return back to the velocity is not sufficient to make the complete revolution and will start oscillation. राइट मैं थोड़ा धक्का दूंगा क्या होगा? ये तो उधर तक जाएगा. इट नॉट कंप्लीट सर्किल राइट बिकॉज वी आर गिविंग लिटिल मैग्नीट्यूड. सो क्या होगा? ये ऑसिलेट होगा. ऐसे ऑसिलेट होगा इन द लोअर हाफ में एक्सेलेरेट ऑसिलेशन होगा. मान लो थीटा इक्वल टू अल्फा में ऑसिलेशन होगा. कैन यू फाइंड दैट अल्फा? हाउ टू फाइंड अल्फा? तो मैं थोड़ा वेलोसिटी दिया, ये जाएगा जाएगा जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 हो जाएगा. उसके बाद इट विल रिटर्न राइट. इन यूज दैट फॉर्मूला में v इक्वल 0 लगा के ट्राई टू फाइंड अल्फा. थीटा के जगह में अल्फा लगाओ. इन द फॉर्मूला में v इज इक्वल टू अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में v 0 लगाओ एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा लगाओ एंड फाइंड अल्फा. कॉस अल्फा फाइंड करो. बिकॉज ये क्वेश्चंस में ऐसा ही करने का आपको फॉर्मूलास वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स बट क्वेश्चंस में दिया तो आपको मेथड से करना पड़ेगा.
सो वो ऑसिलेट होगा इन द में, वो बोल रहा है कि कितना एंगल में आपको एंगल कितना होगा। सो थीटा के जगह में अल्फा लगाओ एंड फाइंड कॉस अल्फा। So won't Yes. it be कॉस अल्फा इज हाउ मच? 1? सो इसका So V स्क्वेयरिंग is किया तो हाँ, V is equal V naught. नहीं इक्वल यहाँ कैसे, जीरो लगाओ। जीरो इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग में बोल सकते तो रूट निकल जाएगा, -2GL इंटू 1 - cos अल्फा। So I'm Yeah. asking just cos alpha is how much? So minus V naught square is equal to -2GL into 1 - cos alpha. So minus may cancel. So V naught square by 2GL minus 1 is equal to cos alpha minus cos alpha. So my cos alpha is equal to क्या होगा? 1 minus V naught square by 1 2. - V naught square by 2GL. Or I can write 2GL minus V naught square by 2GL. ओके, दिस इज अ कॉसल, मतलब वे ऑफ सॉल्विंग, आई एम टेलिंग। मतलब अगर इतना वेलोसिटी, मतलब इधर जाके वेलोसिटी जीरो हो गया, उस टाइम में आपको कितना एंगल है पूछे तो यू गॉट टू फाइंड लाइक दिस। ओके, चलो नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट वेलोसिटी के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट टेंशन के बारे में। when the bob is reaching at point B, at that point में what is the tension? How to find tension? Tell me. इस पार्टिकल के ऊपर टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स So to सेंटर। take components. व्हाट So कंपोनेंट? we get T minus mg cos theta is equals to Because when a T particle is cos rotating in a circular path, net force acting towards center is always equal to centripetal force. yeah. So net force will be इस तरफ वाला तो mg cos theta था ना, so Yeah. net force towards center is T minus mg cos theta is equal to mv square by r के जगह में L, radius is L, so therefore tension is mv square by L plus mg cos theta. So it's depending on theta, right? So therefore tension will change compulsory. Every point of time में tension will change. कौन सा एंगल में जीरो होगा मीन्स व्हाट यू विल डू? कौन सा एंगल में टेंशन विल बी जीरो मीन्स व्हाट विल सबस्टिट्यूट? टेंशन जीरो लगा के थीटा फाइंड करने का। Yeah, so done. Okay. Yeah. See, during circular motion, sometimes it can is go possible back. that Okay. okay. Uh, during circular motion, sometimes it is possible that tension of the thread becomes zero. Sometimes tension will be zero हो जाएगा. Then it cannot occur in the lower half cycle of the circle, but it can possible when a particle is making revolutions in the upper half of the circle. Below में कभी भी tension zero नहीं होगा, below half में. Why? Because tension will be acting every time. But ऊपर जाने समय there is a chance of losing its contact, मतलब वो tension zero होने की chance सब there upper half circle में. He will ask at that time में what will be the angle? Tension zero time में what will be the phi बोल के पूछेगा. Tell me how to find. So theta equal alpha में maybe tension is zero. So equation में सबसे करो, tension zero लगा के solve करो. T is equal to what is the formula we got? mg cos theta plus mv square by L, right? So he's asking tension zero time में I want angle कितना है, angle कितना होगा, and v के जगह में आपको क्या करने का method I'm telling, but no need of solving. T को zero लगा के find cos alpha from that, and v separately will calculate, right? v आ जाएगा उस टाइम, उस particular point में v भी आ जाएगा. If we substitute we'll get alpha. See, फॉर्मूला बैड करने की जरूरत नहीं, इसमें क्या बैड करने का, वेलोसिटी बैड करने का, एंड क्या क्या बैड करने का विल टेल यू. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक ही बैड करो,
always दूसरा method tension we can do by method only. Net force acting towards center is always equal to centripetal force करके tension find करने का. That's it. समझ में आ रहा है? चलो. Now, condition for completing vertical circle. आपको vertical circle पूरा complete करने के लिए what is the condition I want? Okay, tell me what condition I have to give so that it will complete the circle. इनिशियल वेलोसिटी कितना देने का एंड टॉप में कितना रहेगा, ये तो फिक्स है, ऐड करना पड़ेगा. फेमस है. Initial velocity is root 5 Root GR, 5 GL. हाँ, root 5 and GL, ऊपर and then हाँ, root Two. GL. Root 2. हाँ, root Can you GL, go root back for a GL, second? root GL. Yeah, okay, done. चलो, now that only we are trying to find for condition for completing the circle. Okay, so ये इसमें टेंशन कितना है, टेल में इसके ऊपर टेंशन इन द टॉप में. हाउ टू कैलकुलेट टेंशन, आई टोल्ड यू. उसके ऊपर व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. सो टेंशन इन द टॉप plus mg, net force acting towards center is this much only, is equal to mv top square by L, right? So now tension कितना है, tension is equal to mv square by L minus mg. Okay, now tension is always top में क्या होगा, top में tension कितना होगा, it is इक्वल टू 0 होगा इफ आई गिवन वेलोसिटी और ग्रेटर देन इक्वल. कंप्लीट सर्किल करने के लिए आप लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का. टेंशन ऑलवेज, टेंशन शुड बी इन द टॉप में ग्रेटर देन इक्वल 0, देन ओनली इट विल कंप्लीट द सर्किल. व्हेन यू आर गिविंग रूट 5 GL, टॉप में कितना टेंशन रहेगा मालूम है, टेंशन विल बी 0 हो जाएगा टॉप में, टॉप मोस्ट पॉइंट में, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट इज कमिंग आउट, ऐसा फिर से सर्किल घूमेगा. ओके, सो टॉप में कंडीशन क्या है, टेंशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, देन ओनली इट विल कंप्लीट द सर्किल. So tension equal to 0 करो, mv square by L minus mg greater than equal to 0. So कितना होगा, mv square by L is greater than equal to mg. So mm cancel, v is greater than equal to under root GL. This is top में. That is minimum. What is the minimum velocity should be there? V minimum should be the top में root GL. And you know either velocity. Initial velocity can you find, मतलब starting velocity you can find by using the formula. Use करो and find the velocity. Final velocity you know, right? V is equal to what is formula? Under root V naught square minus 2GL into 1 minus cos theta. So here V you got as root GL. Find initial velocity. And theta is how much? This is the initial point. Right? Theta is how much? थीटा इनिशियल ऐसा था ना, इधर से इधर तक. सो 180 cos 180 डालने का. एंड टेल आंसर. Cos 180 is -1. So you'll get V naught square minus, no, you'll just get V naught, right? V naught, no, what V naught? So it is Root absolute 180 5 degrees. You'll get V equals to root of V naught square. So you get Oh. root 5 GL. Root 5 GL will get. So V naught is equal to under root 5 GL. This is answer. L is the radius only. Oh my God, never mind. I got it. Okay. Let's So finish that it. means if I given the bob with velocity under root 5 GL, definitely it will go up. Tension will be 0 at this point. Because of inertia, it will complete the circle. उस time में velocity will be under root GL. ये बहुत famous है, root 5 GL, root GL. So V max is root 5 GL. मैक्सिमम नहीं है, मतलब इस वेलोसिटी में अगर मैं बॉब को दूंगा, इट विल कंप्लीट सर्किल. दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी. सी मैक्सिमम इज इफ आई थ्रो विद सो मच आल्सो इट विल गो. That's velocity for the bottom. बॉटम में, दिस इज द बॉटम में, एंड दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी. So this is a V top. V top is should be greater than equal to GL, but the minimum value at the top is root GL. Okay. root GL, yes.
Okay, so this is the thing, complete the circle के लिए. Now question क्या है, if I given less than, मतलब आपको क्या करने का, velocity दिया तो you can check whether it will go, it will complete the circle not complete the circle, use करके फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा. What is the velocity, वो satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उससे कम है तो क्या होगा, it will oscillate in the lower half of circle, ऐसा चेक करना पड़ेगा. Okay, suppose मान लो, देखो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, द स्पीड बिकम्स जीरो बिफोर टेंशन. देखो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन जनरली केस वन में, देखो इफ वी नॉट इज थियरेटिकल है, वी नॉट इज लेस देन रूट टू जी एल, टेल मी इट विल कंप्लीट द सर्किल और नॉट. वेलोसिटी आई एम गिविंग लेस देन 2 gl, Sir, V रूट naught 2 is the gl. bottom, right? हाँ बॉटम का. So shouldn't बोलो. that be equal to root 5 GL? नहीं नहीं, दैट इज आवर विश. रूट 5 gl दो, रूट 4 gl दो, रूट 3 gl दो. आई एम गिविंग द बॉब विद दिस वेलोसिटी. So at that time क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, whether it will complete the circle or not. No. Whether it will complete the circle, no. Not Only if you given 5 gl and above, then only it will complete the circle. So it will oscillate in the lower half of the portion mein. Okay, so chahe to likho, in this case tension cannot be zero and string will not slag, and string will not slag, and it is a oscillatory motion. It is a oscillatory motion. मतलब लेस देन रूट टू जीरो है तो डेफिनेटली नॉट कंप्लीट सर्किट, इट विल गो इन द लोअर हाफ में, टेंशन विल नेवर बी जीरो एंड द मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. एट 2 gl में क्या होगा मालूम है, एग्जैक्टली हाफ तक जाएगा एंड कम बैक. एग्जैक्टली हाफ तक जाएगा, मतलब सेमी सर्किल कवर हो जाएगा पूरा. ओके, नाउ आई एम गिविंग द वेलोसिटी. Okay, no? Now I'm giving the velocity which is greater than root 2 gl and less than, और देखो I given v naught is greater than root 2 gl and less what than, happens for case one? case 1 में I told right, case 1 में क्या होगा, whether the tension will be zero means tension will not be zero. लिखो tension will not be zero, मतलब it does not slack, the string will not slack Okay, no and slack. no Yeah. slack, and the motion is oscillatory motion, simply oscillate motion. Case 1. Okay. एंड केस 2 में टेल मी, यू विल टेल मी किधर तक जाएगा ऑब्जेक्ट. v नॉट इज ग्रेटर देन रूट 2 gl लेस देन 5 gl, किधर तक So जाएगा, it can go to the like टॉप तक जाके upper half, अपर and ऑफ then में it will टेंशन विल बी slack, जीरो हो and then जाएगा. it will go like projectile. पैराबोलिक पाथ में जाएगा. ओके, सो लिखो टेंशन द स्ट्रिंग बिकम जीरो बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, स्ट्रिंग स्लैक्स एंड पार्टिकल लीव्स द सर्किल. And which path it will go, it will go like a parabolic path. Sir, how do you calculate what point it will go up to? That we will calculate by 5, मतलब angle. See initially आपको ये देखो, ये तो मालूम है 90 डिग्रीज तक जाएगा, ये एंगल फाइंड करने का अल्फा. by using conservation of energy also we can calculate from here to here, क्या करके we can add कितना एंगल घूमेगा बोल के. ओके, समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन 90 लेस देन, Yeah, okay, sir. Once again. yeah. So what is it? String slacks, right? String slacks and particle leaves the circle and it will fall like a parabolic path. So root 2 GL is 90 degrees. 90 degrees वाला, exact 90 degrees वाला. And tension जीरो करके also we can find the value of phi. Okay, कितना एंगल में घूमेगा बोल के टेंशन जीरो करके भी हमारे एक्सप्रेशन में we can calculate. Okay, now different cases में tell me, now find all the cases में. Okay, now first when the bob is at bottom में, now calculate मुझे टेंशन, tangential acceleration, normal acceleration A बोलो, फाइंड करो एक एक का, टेल आंसर्स.
बॉटम में जब होगा फाइंड टेंशन. टेंशन के लिए आई टोल्ड यू ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर अ मेथड नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इक्वल करो एंड टेल द आंसर. एंड एंगल इज हाउ मच. ठीक है, कितना होगा? नेट फोर्स इक्वल टू so at A में what is the force acting downwards mg and tension कितना? One second. and मान लो the velocity which I am giving is root 5 gl. हाँ, इसमें सर्च करो find tension now. So you'll get T minus mg is equals to mv square by L. v के जगह में लगाओ mv naught square by l, right? So Okay. So m5g. So you'll get T as m into 6 mg. tension is 6 mg. So you got first one. Okay, now tangential acceleration formula I told you g sin theta, but theta is how much here initially? So it's a root 5 gl, right? It should be 180 degrees. नहीं at a point में I want tangential acceleration so much. at is formula क्या था? g sin theta. So theta is 90, right? Theta is 0 initial here, right? Here point. It's not go when time I'm starting at a point में I want. Yeah. Okay, theta is 0. So at is tangential acceleration is 0. Zero. There is no acceleration initially. Okay. And And an net acceleration. yeah, centripetal acceleration, normal acceleration. There will be AC only. Formula That कितना? हाँ, AC only. V square by V L. naught square by L, right? 5g. 5g. Yes. Right? Yeah. Now you know ये B का पॉइंट है सेम, D का पॉइंट भी सेम आएगा. जो ये पूरा जो हो रहा है ना B का पॉइंट D का पॉइंट का सेम आएगा. टेंशन होने दो, एक्सेलरेशन होने दो, कुछ भी होने दो. B and D आर सेम. इसका करो. Now B and D का फाइंड करो. I want some same thing, tension, acceleration and normal centripetal acceleration. Just 1 second. B का फाइंड करो which is same as D. No need of finding D again. Sir, Tell. mb square by r is tension. अरे V की जगह में लगाओ root 5 gl. All are I'm giving root 5 gl only. Oh, So इधर velocity कितना होगा? I So giving in fi- all case में I'm giving root 5 gl only in this में. Bottom में I'm giving root 5 gl. But velocity will change. वो find करके then solve करो. sir, 5 mg is tension. 5 mg is tension, huh? Wrong. Why? Because you are using velocity root 5 gl here. Here 5g root 5 gl नहीं रहेगा. Decrease होता जाएगा velocity. How to calculate velocity? So why did they give the second diagram? Oh, D 2 point by. mg. See, B and D में I'm asking tension, acceleration and normal action. So first B का find करो. Then we go for the second diagram. First B का find करो. Wait. Sir, So won't 2 the mg. कितना? Tension is 2 mg. नहीं wrong. Sir, you only told at 90 degrees it will be root 2 mg though. नहीं ऐसा नहीं है. You first So what will be calculate 5 velocity is how mg? much. The velocity is how much? Tell me. So won't it be 5 mg? No. Sir, because if you take components of mg of B, you'll get mg पहले you're not understand this one. देखो V naught square minus 2gl into 1 minus cos theta, right? yeah? आपको पहले इधर velocity find करो, बाद में बात करेंगे. First velocity find करो. I want It will be root 5 gl only. root 5 gl ना. Why? Velocity decreases, goes on root decreasing. 2 gl, right? Oh, sir, root 3 gl, root 3 gl, root 3 gl. root 3 gl. Okay. सर्च करो, चेक करो. V So where is did equal root to 3 gl come from? that only. देखो root 5 gl I'm giving, right? So कितना होगा? 5 gl minus 2 gl into 1 minus cos angle is how much? 90. Yeah, Cos wow. 90 is 0.
So कितना होगा? √3gl, right? So velocity goes on decreasing, goes on. See, पहले वाला √2gl दिया तो ये जाके इधर तक रुक जाएगा. वेलोसिटी आई एम नॉट लिंग. आई एम धक्का दिया तो किधर तक जाएगा बोल के मैं पूछ रहा हूँ. किधर तक जाएगा? वो 90 तक, बी तक जाके रुक जाएगा. ऑसिलेटिंग मोशन. बट हियर वेलोसिटी कितना है पूछ रहा हूँ. उस पॉइंट में वेलोसिटी सो मच, √3gl रहेगा. ओके, दैट वी गॉट फ्रॉम दिस फॉर्म. नाउ सबस्टिट्यूट. नाउ फाइंड टेंशन. नाउ कट आ जाएगा. नेट फोर्स इज 3 टुवर्ड्स mg. द कितना? 3 mg. 3 यस, mg. करेक्ट. हाँ. Now tangential acceleration. G. G. Yes, good. And Sir, wait, sir, I have a centripetal. doubt. Tell me. I'm getting tension as 5 mg. Tension ka net force towards center is always equal to centripetal force, right? What is the force acting? Only T only, right? Yeah, Is equal to mv square by Oh L. my God. Sir, I took V as √5 by mistake. Again, 3gl lene ka, right? Again. The tension you got as And 3. net acceleration will be, oh, wait, centripetal acceleration is 3g. So net Centripetal acceleration is √10g. Tangential acceleration, how much you got? G. G. And centripetal acceleration is 3g. Yes, correct. So same point D में भी होगा, same. So B and D पूछे तो same है. Okay. So for A and C also will be the same. No, C का find करो. नहीं, A and C कैसे same हो जाएगा? It goes on, tension will changes, right? हाँ. ये तो मालूम है. अगर मैं दिया तो इसका velocity √5gl. इधर दिया तो क्या होगा? ऊपर कितना है? √2gl. Tension will be 0 now, sir. Tension will be 0. And velocity will be √2gl. √2gl किधर से आ रहा है? अभी तक Oh, किया ना? √gl. √gl. I'm giving this Oh my velocity. God. So ऊपर velocity at C is √gl. Now tension तो 0 होगा. No need of calculating also. And centripetal acceleration and tangential acceleration. Tangential acceleration is G sin theta is the formula. Theta is 180 degrees. Sin 180 is 0. So tangential acceleration is 0. And So centripetal acceleration. centripetal acceleration is G. Yes, very good. C square by L. So G L by L G. So every point of time में how to calculate. Sometimes आपको अगर ये formula भूल गया, velocity formula भूल गया, that time you can use conservation of mechanical energy anywhere from this point to this point, and we can get the value. Velocity वगैरह पूछे तो अगर formula So भूल गया. how do you find AT? AT's formula is always G sin theta. Oh, so every time. Every time. So theta is how much? From here to here is 180. Okay. Theta from always we are taking from vertical से ऊपर तक. So 180. Cos sin 180 is 0. That's why 0. Okay. Some more cases are there. वो that result लिख देंगे, हो जाएगा. हो गया? तो 2 numericals करो first. करो. JEE मेंस क्वेश्चन देखते हैं who will do. So we have to take the angle with respect to down, right? डाउन से लेने का. बट क्वेश्चन के हिसाब से देखो किधर से किधर तक. So the angle will be 135, right? ये तो एंगल 135 है. इधर से इधर तक 135. So sir, can't we just use V0 square minus 2GL 1 minus? You tell answers. You tell answers. JEE mains questions. It came in 2024. Oh, super. Karo Krisha. I'll give options. You tell answer. 19.8, So I'll get it now. 21.9, 10.6 meters per second. R value is given 14. G10 √2 value 1.4 लेने के लिए बोला. Radius is given. So what do we take the initial velocity as? He only told. पढ़ो क्या बोला. M slides from rest. Okay. So we want to be √3GL. The options are given. You tell me answer. 1 second. See, sir, they said from rest, right? So it should be A body of mass m kg slides from rest along the curve vertical point from A to B. M में इधर से इधर तक जा So रहा it है. will slide along the curve or will it Along the go curve in only. parallel? Along the curve. So Frictionless shouldn't है. it go in a Velocity of the parabol? body at B is.
Shouldn't it go in like that? नहीं Because नहीं ऐसा नहीं there it's कुछ more नहीं than 90, no? नहीं ऐसा नहीं ही पुट ऑब्जेक्ट हियर ऐसा स्लाइड हो रहा है जुम बोल के स्लाइड हो रहा है इधर से गिर रहे हैं so at that time में velocity of the board b is how much he's asking velocity is how much here Sir, so in the formula, Sir, I got it as 16. Wait, no. sir, I have to substitute. No, one second, let me try. Sir, yeah, so I have to substitute v naught as 0 only, right? initial velocity as zero ना but Yeah. see our formula में क्या था vertical circular motion में normally नीचे से थ्रो कर रहा हूँ that time velocity ऐसा लगा but आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं क्या बोला मेथड क्या है टेल में सपोज ऊपर से नीचे होने दो नीचे से there is no friction here there is no work done by external agent The conservation of mechanical energy is हाँ too confusing. सिंपल है वो अप्लाई करना सीखो वेरी इंपॉर्टेंट आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आल्सो इट विल सॉल्व So, but if we use the velocity formula, will it be harder? वेलोसिटी फार्मूला कब यूज करने का व्हेन वेलोसिटी से नीचे से थ्रो करने से ऊपर वेलोसिटी कितना है बोल के ओके Yeah. हाँ ट्राई करो नहीं ट्राई करो आंसर आएगा उसमें भी आएगा करो No, sir, for that, what should I take v naught as? इनिशियल वेलोसिटी तो इधर 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 जीरो ले रहे हैं ना इधर फाइनल वेलोसिटी और कैलकुलेटिंग राइट Yeah, sir, B. okay, I can see. That's what. ट्राई करो Sir, I'm getting 16.7. షూరా 2024 మరి యువర్ విష్ Yeah. देखेंगे यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सॉल्व इजी हो जाएगा 2 स्टेप्स में आ जाएगा ट्राई टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मेकेनिकल एनर्जी because we got the formula velocity from the expression from the conservation of mechanical energy only, but bottom से throw करूंगा सो इनिशियल वेलोसिटी ऐसा ले लो चाहे तो इफ यू वांट फॉर्मूला में यूज करें इनिशियल वेलोसिटी v लेके फाइनल वेलोसिटी जीरो करो ऐसा करो पुणे कुछ आएगा फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी u v लेके फाइनल वेलोसिटी जीरो करो ऐसा करो Sir, I got 21.9. कितना 21.9. देखेंगे Sir, I used this thing only. Velocity formula. That's वेलोसिटी very फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी हाउ मच यू टुक 0. जीरो लिया ओके देखेंगे So, but you get like a negative value, so I took mod of it. नेगेटिव लगेगा या I took mod of it. yeah so it is which answer see conversion में क्या करें आप conversion में Sir, क्या I करें use conservation, so we get half mv square is equal to mgr 1 minus cos theta plus half mv square. देखो इधर से इधर तक हाइट देखेंगे ये रेडियस है ना ये Yeah. कितना होगा ये कितना है कितना हाइट है R r square, sin R 45 cos. right so Yeah. r by root 2 right now apply conservation of mechanical energy at a and b में point में हाँ Sir, it's either 19.8 or 20. आंसर एक बोलो 2024 your wish uf plus kf okay initial potential energy is how much ground से कितना height में this one right so mg into r plus r by root 2 plus initial kinetic energy is 0 है final potential energy also 0 है plus kinetic energy is half है 21.9. that is answer mm so v no substitute खत्म v is equal to under root 2g into r plus r by root 2 if you Sir, substitute the values you'll get as 21/9 is answer Sir, I took conservation mechanics from that B, from that midpoint, sir, that right angle point from C इधर to तक का भाई इधर तक क्यों पूरा लेने का Sir, because you know the velocity there is root 3 GL. root 3 gl कब आएगा when you throw with only root 5 gl
He is throwing root 5GL is not mentioned, right? Either said drop or it. Okay, is a drop or it. So that's why वो special cases में particular में you can use that इधर से इधर तक root 3GL वगैरह में. Don't use all normal problems में conservation of mechanical energy लगाओ, easy questions में solve हो जाएगा. So कभी भी डरने का नहीं, conservation of mechanical energy. UI potential energy, kinetic energy formula यहाँ पे square. And potential energy formula कौन सा use कर रहे हैं? Gravitational potential energy. That's it. MGH. Yes, sir. Okay, करो. So 1 second. Yeah. Yes, sir. HI. That's I can go. Yeah. 2021 numerical based question. एक गाना गा रहा है. Sir, 2. Very good. 2 is answer. So vertical circular motion का इतना ही One है. second, sir. हाँ. Sir, never mind, got it. Yes, sir. I got 2. Yes, 2 is answer. So same question, right? V equal to formula use करना पड़ेगा, right? Under root V naught square minus 2GL into Sir, 1 I'm minus ready. cos Wait, 1 second. theta 60 cos 60 is 1 Sir, by if 2. you use the formula, Formula only what is the V equal to root of V naught, that one. V naught square. V naught square is how much? Initially 3. V naught square is 3 or V is 3. V is 3. V naught is square 3, right? 9. Yeah, exactly. But So करो if you solve do that, करो. you'll get, I'm getting 9 is equal to V V naught naught square minus 5 star plus 5. No, within few seconds we'll tell yes sir I got No, it. sir. This is the guarantee. We got under root V naught square is 9 minus Sir, 2. V isn't V3. Why initial the bob has a speed of 3 meters per second while passing through the lowest point. What is the speed at angle 60 degrees? V चाहिए ना? We want to find V. Initial velocity is 3. Okay. So 2GL into L कितना है? L is 0.5. So 1 by 2. That's the value get 2. 1 by 2. Solve किया तो कितना आएगा? You'll get as 2 meters per second is answer. There are some more cases are there. वो learn करेंगे. Sir, देखो. once can I go back? Yeah. Before this. Before this, sir. So in this for A, how is the kinetic energy 0? Initially, it told from rest side slides. A point में. Slides rest from rest है ना? Rest means kinetic energy 0. Got it, sir. Okay. Condition for looping इन सम अदर केसेस में कौन सा एक केस लिया. देखो बाइकर एक ऐसा झूम बोल के जाएगा, एक राउंड ऐसा मार के फिर से चला जाएगा. इसमें what are the things they will ask? Simply what is the minimum velocity at the highest point and lowest point में कितना है? That's it. So it's same. Velocity at the bottom will be how much? Minimum velocity to complete the circle is under root 5gr. R is the radius of the circle in this way. And velocity at the top will be how much? Highest point will be root gr. This is same for this one. In this case also. Person going rotation कर रहे बोल तो इसका same. Conservation of mechanical energy से same आएगा. Next. हो गया ये वाला? कॉपी
second. सेकंड केस में bead attached to the ring and rotated. A ring का bead attached and rotated ऐसा zoom बोल के. So he's asking what is the velocity with which he has to throw to complete the circle. In this case में you will get as इसका radius r मान लो. So it is under root 4gr. इसमें केस में under root 4gr देने पड़ेगा. Then only it will complete the circle. Okay? बीड एंड रिंग का अटैच है मालूम है ना वो रिंग्स बैंगल्स रहेगा ना ऐसा बीड्स एंड रिंग अटैच ऐसा Sir, at the And top, दूसरा हाँ sir, at the top, root 2gr. नो ये दिया था वेलोसिटी विल बी 0 जब तक Okay. and we can calculate by using the formula also if you want. So shouldn't they add up to root 6gr? नहीं भाई 6gr ऐड कर root gr only when you throw under root 5gl अगर throw किया तो then only it will go actually. नेक्स्ट ये वाला बॉल रोटेटेड बिटवीन स्मूथ सरफेस ऑफ ए पाइप पाइप में ए हॉलो पाइप पे बॉल इन में रोटेट कर रहेगा इन दैट केस में कितना वेलोसिटी दूं सच ए वे दैट इट विल कंप्लीट Can you go back for a second? Why is it root 4g? रूट 5 अगेन कंजर्वेशन मैकेनिक लगा के वो सॉल्व किया था आएगा बट इसमें कुछ जरूरत नहीं है स्पेशल केस याद रखो बीड्स अटैच टू द रिंग एंड रोटेटेड मींस रूट 4gr. Okay, fine. I'm not writing that. रूट 4gr लिखेगा तो इट विल कंप्लीट सर्किल इन दिस केस में एंड सेम में व्हेन यू टेक ए पाइप में हॉलो पाइप में एक बॉल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम व्हाट वेलोसिटी शुड गिव सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्किल मींस इसका भी सेम फॉर्मूला है v मिनिमम एट द बॉटम में इज अंडर रूट 4gr. सो ये वेलोसिटी दिया तो This V minimum is in the outer circle or inner circle? इनर में उस बॉल को कितना देने का वेलोसिटी देने का ये बॉल को तो then only it will complete circle root 4gr. So by this your complete chapter successfully done. Vertical circular motion everything done.